Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be fine. Dear students, as you know, our topic is reproduction in case of flowering plants, reproduction in case of anthophytes, or reproduction in case of angiosperms. But मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, you know the definition of this reproduction, which is a biological process of self-perpetuation, where one organism has ability to transfer the genetic material to next generation here. It maintains the races, it maintains the generations. We also discussed that reproduction is of two types. One type is called as asexual mode of reproduction, which is evolutionary primitive, doesn't involve neither meiosis nor fertilization or synagamy. It is present particularly in the primitive world, that is kingdom Monera. We observe that means bacterial cells show this type of mode of reproduction. Besides, in the higher organisms, in angiosperms, in flowering plants, we also observe what is called as vegetative propagation, where stem, leaf, root are the vegetative propagules responsible for vegetative propagation as well. But we also discussed that evolutionary advanced mode of reproduction is sexual mode of reproduction, which involves meiosis, which involves synagamy, which involves fertilization, and this is present in higher biological world, including human beings and angiosperms. Then we discussed that in angiosperms, a modified shoot is evolved responsible for the sexual mode of reproduction. This is actually called as flower. Remember, study of flower is called as anthology, and such type of plants are also called as anthophytes. But मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, एक flower होता है, which is the message of love, source of inspiration. It's of diverse types. जो हमने क्लासिफिकेशन यहां पे दी थी, मैंने आपको बताया था, flower can be complete with all the flower bulbs, it can be incomplete, lacking some bulb here. And दूसरी क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताई थी बेटा, on the basis of sex. A flower can be called as perfect flower if it contains both reproductive words. अगर इनके पास एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, और हम आगे पढ़ेंगे, दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ब्स प्रेजेंट है, you must call that this flower is perfect flower. You call this as perfect. We say that it is bisexual flower. एक पॉइंट. दूसरा मैंने बताया था, अगर एक फ्लावर के अंदर या एंड्रोशियम प्रेजेंट है या गाइनोशियम प्रेजेंट है, we say it is imperfect flower. बेटा, you call this as unisexual flower. और लास्ट पे मैंने आपको बताया था, अगर एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर सिर्फ एंड्रोशियम होगा, गाइनोशियम विल बी एब्सेंट. प्लीज रिमेंबर, इट विल बी मेल फ्लावर. जो मेल फ्लावर होता है, इसके अंदर खाली एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ब प्रेजेंट होता है. और दूसरा जो फ्लावर होता है, इसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ब होगी. दिस विल बी पिस्टलेट फ्लावर, इट विल बी स्टेमिनेट फ्लावर, एंड दिस विल बी पिस्टलेट फ्लावर. इसके पास एक ही रिप्रोडक्टिव वर्ब होगी. दैट रिप्रोडक्टिव वर्ब विल बी, प्लीज रिमेंबर, दिस इज गाइनोशियम. आज हम टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे. थर्ड टाइप ऑफ फ्लावर कैन बी present in the angiosperms. This flower is actually called as neuter flower. It's sterile. Neither male reproductive organ nor female reproductive organ.
Such flowers are neuter, and remember, these flowers are actually sterile in nature. So अगर आपने याद रखा है, on the basis of the sex here, we will say कौन सा sex present है, मेल है, फीमेल है, दोनों है. We say perfect, दोनों reproductive walls. एक ही imperfect flower, I mean unisexual. Male reproductive flower है, male reproductive wall है, तो staminate flower है. Female reproductive wall है, तो pistillate flower है. If this and this both are absent, na ye hai, we say that this type of flower is called as neuter flower. At instances in the reproductive biology, in the angiosperms, we can observe that neuter flower can be present here. Okay, so this was the classification of the flower here on the basis whether reproductive wall is containing both, flower is containing both the reproductive walls or any one of the reproductive wall. इसके बाद बेटा हमने एक पॉइंट आपको यहां पे बताना है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर को एक्सप्लेन करने से पहले ये इंट्रोडक्शन है, वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स. मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं. प्लांट्स टेकिंग द फ्लावर इनटू कंसिडरेशन, वी कॉल देम एज, वी क्लासिफाई देम इनटू टू टाइप्स. एक प्लांट है विच वी कॉल एज मोनोइशियस फ्लावर. दूसरा जो प्लांट है, दिस विल बी कॉल्ड एज डाइशियस फ्लावर. सर सॉरी, डाइशियस प्लांट. सर व्हाट आर मोनोइशियस प्लांट्स? बेटा कहते हैं अगर एक प्लांट के पास मेल एज वेल एज फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, एक ही प्लांट के पास मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है और फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट है, वी से दैट दिस प्लांट इज कॉल्ड एज मोनोइशियस प्लांट. सपोज जियामेज, दिस इज जियामेज, ये कॉर्न प्लांट है, यहां पे मेल फ्लावर्स है, यहां पे फीमेल फ्लावर्स है. एक ही प्लांट के पास मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है. प्लीज रिमेंबर, इट इज मोनोइशियस कंडीशन. लेकिन इन कंट्रास्ट टू दिस मोनोइशियस कंडीशन, देयर इज सेकंड कंडीशन इन द रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, दैट इज डाइओशियस प्लांट्स. डाई मीन्स टू. अगर मैंने किसी प्लांट को देखा, इस प्लांट में सिर्फ male flowers present, only male flowers, no female flower will be present on that very individual. और दूसरा प्लांट मैंने देखा, इस प्लांट के पास फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है, देयर विल बी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. जिन प्लांट्स में ये डायमॉर्फिज्म है, लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक एनिमल्स, कि मेल प्लांट अलग, मेल फ्लावर्स इसके साथ, फीमेल प्लांट अलग, फीमेल फ्लावर्स इसके पास प्रेजेंट. Please remember, this condition is dioecious condition. For your additional information, जो cotton woods होते हैं in Kashmir, they release the cotton during the season of May, June. They cause number of allergies. That is popular trees. Please remember, इस popular tree की जो ये popular tree में एक property है, इसका male plant अलग है और इसका फीमेल प्लांट अलग होता है. सो दैट मीन्स दे शो व्हाट इज कॉल्ड एज डाइशियस कंडीशन. सो एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना था, मोनोइशियस प्लांट्स क्या होते हैं और डाइशियस प्लांट्स बेटा क्या होते हैं. आपने याद रखा है, अगर एक प्लांट पे ही मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे एट डिफरेंट लोकेशंस, मोनोइशियस कंडीशन. अगर एक प्लांट में डायमॉर्फिज्म है, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, then you must remember that such plants are called as dioecious plants. Now coming to our own topic. So what is that? That is structure of flower. Now we'll need the diagram. Structure of flower. बेटा structure of flower को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम बनाई है. अब देख लीजिए, इस डायग्राम में ये पेडिसल है. This is one part, we'll explain. इसके बाद ये basal part है, apical part of this pedicel. Basal part where all the whorls originate. This I write here thalamus. Then there is outermost whorl that will be calyx, sepals. Then there is second whorl that is corolla petals. Then there is androecium, male reproductive whorl.
then there is gynoecium female reproductive organ. So हम यहां पे बताएं, एक फ्लावर के पास बहुत सारे पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट, प्लीज रिमेंबर, बेटा याद रखिए, फर्स्ट पार्ट इज पेडिसल. सेकंड पार्ट, दिस इज थैलामस. थर्ड पार्ट, दीज आर वर्ल्स. बेटा सबसे पहले हम ये दो पार्ट्स एक्सप्लेन करेंगे, then we'll come to the worms. What you do? We go to the rose plant, we pluck it. जब अपने रोज को प्लग किया, आपने इसका स्टॉक हाथ में रखा है. जो एक रोज फ्लावर का, जो एक फ्लावर का स्टॉक होता है, जिसे अटैच होता है, बायोलॉजिकली दिस इज कॉल्ड एज पेडिसल. So I will write, it is stalk of flower. It is the first part of this flower, which is regarded as stalk for this flower. आपको मैं एक additional point यहाँ पे बताऊं. Those who are preparing for the NEET exams, they must remember. Sometimes the flowers can aggregate just at one bunch, just at one place. Please remember. अगर फ्लावर्स कभी एग्रीगेट होते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, रिमेंबर, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस. सनफ्लावर इज द बेस्ट एग्जाम्पल. यूजुअली हम कह सकते हैं कि फ्लावर, सनफ्लावर एक ही लगता है, सनफ्लावर एक ही फ्लावर है, लेकिन बॉटनिस्ट्स विल से दैट इट इज ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, इट इज क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स. This is actually botanically called as inflorescence, and botanically this inflorescence is found in sunflower family, and remember this is botanically called as capitulum. और याद रखना है, अगर एक inflorescence का स्टॉक होता है, आपने सनफ्लावर को ऐसे देखा, सनफ्लावर का ये स्टॉक है जिससे अटैच है, यहां पे सनफ्लावर है. जो सनफ्लावर का स्टॉक होता है, this was called as pedicel, and stalk of this inflorescence is called as peduncle. Please remember, stalk of inflorescence is peduncle, but stalk of the flower is pedicel. हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं. दूसरा जो पार्ट है इस फ्लावर का, above this pedicel there is a swollen structure. इन वर्ल्स के बेस पे एक पैलेट फॉर्म है. So I write this is palate form. सर, इस palate form पे क्या होता है? Actually, these whorls originate. ये whorls वहां से place होते हैं. They are placed there. एक palate form है, जिसपे चारों whorls originate होते हैं. They are placed. This is above this pedicel. Pedicel here. Botanically, we say that this structure is thalamus. Hence, thalamus can be defined as the apical part of this pedicel, which acts as a platform here on which all those four whorls are placed. So hence I have written here that it is a platform here. This is a place here where these four whorls are placed. For your additional information, this thalamus is also called as torus, or sometimes called as a receptacle. So दो पॉइंट्स है, एक स्टॉक ऑफ दिस फ्लावर, दिस इज पेडिसल. स्टॉक ऑफ इनफ्लोरेसेंस, दिस इज पेडंकल हियर. दूसरा थैलामस, a platform on which the whorls are placed here. This is also called as torus. इसके बाद बेटा अब बारी आती है. Now there is turn for main whorls, main parts. These are the four whorls: calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Let's explain. We'll explain the whorls of this flower. Basically, एक complete flower में चार whorls होते हैं, चार rings होते हैं. These whorls start from this calyx, and innermost this is gynoecium. But याद रखिए, we'll classify these whorls into two types. दो टाइप्स की हम बनाए, मैं आपको बताऊंगा डायग्राम से.
कैलिक्स और करोला का मेन रोल रिप्रोडक्शन नहीं है, रेदर दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन। एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव वर्ल्स है, दे आर द मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट रेस्पेक्टिवली हियर। हेंस ये दो वर्ल्स रिप्रोडक्टिव वर्ल्स है और ये दो वर्ल्स नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स है। विल क्लासिफाई दीज वर्ल्स which are 4 in number, they are classified into 2 types. One, non-essential verbs. That means they are not responsible directly for the sexual reproduction here. These are non-essential verbs. बेटा ये जो दो verbs है, these are essential verbs. Sir, we can call them as reproductive verbs. रिप्रोडक्टिव वर्ब्स। दूसरी बात, ये हेल्प करते हैं, दे विल अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, दे विल प्रोटेक्ट द फ्लावर। रिमेंबर दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एसेसरी वर्ब्स, यू कैन कॉल देम एज हेल्पिंग वर्ब्स। बेटा आपने याद क्या रखा, एक फ्लावर के पास, एक परफेक्ट फ्लावर के पास, जो आपके डायग्राम पे दिया है, दिस एलियस ऑफ फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर के पास 4 वर्ल्स है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इन दो का काम होता है हेल्प करना, इन दो का काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्ट लेना। सो 2 किस्म के वर्ल्स है। पहला टाइप क्या है, नॉन एसेंशियल वर्ल्स। दूसरा क्या है, एसेंशियल वर्ल्स। इनको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ल्स, और दीज आर आल्सो कॉल्ड एज एसेसरी वर्ल्स। और इनको हम कहते हैं दीज आर रिप्रोडक्टिव वर्ल्स बिकॉज दे डायरेक्टली हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा याद रखिए, इस वर्ल का जो पहला, जो एक फ्लावर का जो आउटर मोस्ट वर्ल है, ये कैलिक्स है, सेकंड वर्ल इज करोला, और इनमें जो पहली वर्ल आती है, दिस वन एसेंशियल में, दिस इज एंड्रोशियम, दिस इज द थर्ड वर्ल ऑफ दिस फ्लावर, and fourth will be gynoecium. सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे what do you mean by calyx, role played by the calyx. Then we'll go to corolla, role played by this corolla here. We'll just give the information about the first role, that is what do you mean by calyx. As the word suggests, कैलिक्स मीन्स कवर। जाहिर सी बात है, इट एक्ट्स एज ए कवर फॉर दिस फ्लावर। सो अगर हम एक्सप्लेन करें, इट इज डिफाइंड एज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ ए फ्लावर। एक कंप्लीट फ्लावर की सबसे जो आउटर मोस्ट वर्ल है, बेटा याद रखिए, दिस इज एक्चुअली कैलिक्स। ये टीम है, टीम के एक इंडिविजुअल को, कैलिक्स के एक यूनिट को हम कहते हैं सेपल। सो द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ दिस कैलिक्स इज सेपल। सपोज ये एक सेपल है, ये दूसरा सेपल है, ये थर्ड सेपल है, इस वर्ल का नाम है कैलिक्स, लेकिन एक इंडिविजुअल यूनिट इसका है सेपल। So we say that it is outermost whorl of this flower here, and its individual unit is called as sepal. First point. Then we will come to the point. Sir, what is the role played by? What is the function of this calyx? मैं आपको बताऊंगा. It plays number of functions for this flower. अगर आपने रोज प्लांट फ्लावर को देखा होगा, जब ये बड कंडीशन में होता है, इट्स हिडन, अभी इसकी एंथीसिस नहीं हुई है. प्लीज रिमेंबर, एंथीसिस मींस ओपनिंग ऑफ दिस फ्लावर. अभी इसकी एंथीसिस नहीं हुई है. ओपनिंग से पहले ये बड होता है, छोटा सा एक प्लांट होता है, जस्ट लाइक इट्स ए बेबी, इट विल बी कवर्ड बाय द क्लोथ्स. फ्रेजाइल होता है, नाजुक होता है. इसी तरीके से एक फ्लावर इस बड कंडीशन के अंदर इट इज फ्रेजाइल, इट इज ससेप्टेबल टू द एनवायरमेंटल डैमेज. लेकिन बेटा याद रखिए, ड्यूरिंग बड कंडीशन एक फ्लावर को प्रोटेक्शन देने के लिए एक कैलिक्स यहां पे होता है, एक सेपल होता है. सो वी विल से द रोल प्लेड बाय दिस कैलिक्स
it protects this flower during bud condition. जो पहली कंडीशन होती है एंथीसिस से पहले, आप देख ले एक रोज फ्लावर एक ग्रीन सेपल के अंदर कवर होता है. सो इट प्रोटेक्ट्स दिस फ्लावर ड्यूरिंग बड कंडीशन. दिस इज फंक्शन नंबर फर्स्ट. सेकंड, बेटा मुझे बताइए, ये जो कैलिकस होता है, ये जो सेपल होते हैं, these sepals are usually green. जाहिर सी बात है ये ग्रीन होते हैं. यू मस्ट से अगर कोई ऑर्गन ग्रीन होता है प्लांट्स में, डेफिनेटली इट मस्ट कंटेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिगमेंट. दिस इंपॉर्टेंट पिगमेंट इज एक्चुअली कॉल्ड एज क्लोरोफिल. जिसके अंदर ये क्लोरोफिल होता है, it has the property to photosynthesize. So we must say that calyx is green. Sometimes it will be responsible to bring about the conversion of solar energy into chemical energy. ये photosynthesis के लिए होगा. So दूसरी function है. Third, it is this calyx, in addition to corolla, what it does? It protects reproductive worlds. ये रिप्रोडक्टिव वर्ल्स के लिए एक प्रोटेक्शन देता है. These are the king and queen. They are being protected by the slaves. Similarly, its androecium and gynoecium, it is protected by this calyx and corolla. So first function, protection of this flower during which condition? Bud condition. Second, it is green, bringing about photosynthesis. Third, it protects this androecium and gynoecium. It protects what is called as reproductive worlds. बेटा इसके बाद और एक फंक्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा यहां पे. अगर आपने देखा होगा, जब फ्लावर्स में जो पॉलिनेशन खत्म होती है, फर्टिलाइजेशन खत्म होती है, तो सेपल्स और पेटल्स गिरते हैं. लेकिन याद रखिए, देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिनमें टोमेटो एग्जाम्पल है और ब्रिंजल एग्जाम्पल है. टोमेटो एंड ब्रिंजल, इनमें क्या होता है, ये सेपल्स परसिस्ट रहते हैं अप टू फ्रूट स्टेज. वी मस्ट से दैट दीज सेपल्स आर persistent sepals. So that means they remain up to what is called as fruit stage. बेटा याद रखो. So और एक फंक्शन है that there are certain plants like what is called as tomato, like what is called as brinjal. We observe that sepals are attached till the fruit stage. We say such sepals are called as persistent sepals. And remember, these are the functions. So पहला रोल है protection during bud condition, second green, third protection of reproductive worlds, and fourth it is persistent sepal.